So welcome again. In this tutorial, we will be building a Udemy web scraper, and then we are also using file handling in this. So basically हम बनाने क्या वाले हैं, we'll be creating a Udemy web scraper. So basically हम Udemy से सारा data उठाएंगे web scraping से, and then we'll save that all data to a CSV file. So basically इसमें data analysis and web scraping दोनों के concepts include होने वाले हैं. So watch it. This will be fun. So as you can see on the screen, we had imported certain libraries called Beautiful Soup, which includes in PS4 obviously. Then there is requests, time, CSV, JSON. So basically हम host रखने वाले हैं क्योंकि Udemy से हमें सारा data चाहिए. So we are using Udemy. Alright. Then we need certain things like courses, API endpoint. So मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं बस यहाँ copy paste कर लूँगा इन चीज़ों को. So I'll just do this real quick. And in case you need this all code, so I just give this code into the description. You can just go and download that code from my GitHub obviously. So now what we're going to do after these things, like header में हमारा user agent होगा, and then response. So we are going to take a response, and then front page soup, because यार हम पूरा का पूरा Udemy scrape नहीं करने वाले. We are just going to scrape the front page of Udemy. Alright, we are not going to like scrape whole Udemy because वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा. करोड़ लाखों को courses होंगे वहाँ पे यार. That will be too much. So I'm just going to scrape the front page. And what are we supposed to scrape? Like top categories हमें scrape करनी है. All right, we don't want like everything out of the front page also. Front page पे भी हज़ारों courses हो सकते हैं, शायद हम scroll करते जाएं, Instagram की तरह चलता ही चला जाए. So we just want specific top categories. So top categories, how do we get top categories? So for that we need to know कि यार वो tag, वो जो tag है वो क्या है. So we'll be needing the anchor tag of that, and the anchor tag is data purpose equals to category card title link. So basically मेरे को पता है कि यार क्या है, because I've done this like twice or thrice. I've tried this before recording this. So मेरे को यार याद है कि यार category card title link. In case you want to take a look, then you can just go to Udemy और right click करके inspect करके देख लो कि यार वो ए हरफ का क्या मतलब लिखा हुआ है वो सब. You can just check that out. Alright, so now we're going to open our Udemy CSV as file. So basically मेरे पास Udemy CSV नाम पे एक फ़ाइल पड़ी हुई है. तुम लोग के पास शायद नहीं भी होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप क्रिएट हो जाएगी क्योंकि ये राइट मोड में है. ऑलराइट, सो csv.write फाइल, देन write रो. सो रो में हम क्या क्या चीज़ें चाहते हैं, मैं बेसिकली क्या क्या चीज़ें स्क्रैप करना चाहता हूँ. सो आई विल बी राइटिंग नंबर, देन आई वांट द कैटेगरी ऑफ दैट कोर्स पर्टिकुलरली, देन आई वांट द यूआरएल ऑफ दैट कोर्स. फिर मेरे को नाम भी चाहिए कि यार कोर्स का नाम क्या है. बेसिकली अगर कोर्स का नाम ही पता नहीं होगा तो क्या करेंगे यार. उस कोर्स का नाम पता होना चाहिए. उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन, ऑथर कौन है, मतलब किसने वो कोर्स लाइव किया है, द इंस्ट्रक्टर गाय. देन आई वांट द रेटिंग ऑफ दैट कोर्स, कि यार वो पढ़ने लायक भी लेने लायक है भी या नहीं, उसकी रेटिंग्स. देन द प्राइस, कंसिडर करने के लिए अगर रेटिंग अच्छी है और प्राइस भी अच्छी है, सो ऑब्वियसली बायबल कोर्स. बायबल इजंट अ वर्ड राइट. So index is equal to 0 कर देंगे, and then we are going to like go through every single thing. So top categories में हम एक लूप चला देंगे, and we are going to take all the HERF. इसको हरफ बोलते हैं ना शायद, I don't have any idea. like मैं पहले से इसको हरफ बोलता हूँ, पर इसको शायद HERF or something like that, whatever we say it, but I'm just going to go through the loop. So now what we're going to do, host plus top category हरफ. So basically करेगा क्या, होस्ट है हमारा Udemy and उसका हरफ, मतलब दोनों को ज्वाइंट करेगा और कैटेगरी की एक URL बना देगा. हर एक कैटेगरी की एक URL होगी. उस कैटेगरी का मतलब उस पेज का, फॉर एग्जांपल ले लो कि एक कोर्स है पाइथन के रिलेटेड, तो उसकी लिंक में फॉर एग्जांपल उसकी आईडी है 410 और रैंडम नंबर्स है 10-15 नंबर्स ऐसे लिखे हुए. देन इट विल जस्ट ऐड udemy.com इन फ्रंट. सो बेसिकली पूरी लिंक तैयार हो गई हमारी कैटेगरी की, वो उसमें रख देगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ फॉर ऑल ऑफ दोस. फॉर लूप्स तुमको समझ में आता होगा, तुम लोग समझ चुके होगे कि यार किस तरह से काम करते हैं. नहीं पता तो यू कैन जस्ट वॉच some tutorials on for loop. Alright, so basically as you can see on the screen, we are just taking a lot of loads of shit out of the pages. Like page object is equal to json.loads category underscore soup dot find. So basically what we want is एक div tag ढूंढना है हमें which has the class. Alright, और class क्या होना चाहिए हमारा, ud /component /category /category.
मेरे को अच्छे से याद है यार. I just remember things. So perfect. So let's just complete this real quick as soon as possible. So response. Okay, category ID. So page underscore object, page object or ID. All right. So we're going to like mention the indexes of page object and page ID. Right. Once we're done with that, we'll take the response. A response is equal to request dot get host plus course API endpoint percentage. So basically यार you know the URLs है कि URLs में basically होता है ना percentages. Google पे भी कुछ भी search करो तो you will see percentages before IDs और tokens. So tokens और किसी भी API का endpoint होता है उसके बीच में एक percentage sign होता है. So that's what we're going to do over here. So data is equal to JSON loads response dot text. Unit item. Then we are going to create an empty list, like दो empty list बनाने वाले हैं हम. Alright, so दो empty list यहाँ पे होने वाली है हमारे पास and दोनों में हम बाद में सामान भरने वाले हैं. Whatever we are going to create, we'll just add that afterwards, right? So, all right, for course and courses index plus equal to 1. So basically हमें यहाँ indexing कर देंगे हर एक course की. जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे नंबर्स भी आगे बढ़ते जाएंगे. So we'll have the number of courses in the index. हर एक की अपनी आईडी होने वाली, हर एक का एक नाम होने वाला है. एवरीथिंग विल लाइक स्टार्ट होने. Description, rating, all of those things. All right. So author will be something like an empty space. Then join instructor display name. Right, instructor का spelling I'll just make sure that I write the correct spellings over here. Because spellings के साथ यार मेरा अच्छा नसीब नहीं है. So I'll just make sure that I write the correct spellings. Alright, instructor display name for instructor in course. So basically इसमें जो भी course के अंदर instructor होने वाला है we'll be just writing his name inside this. इसको simple तरीके से scrape कर सकते हैं but it is fun like doing interesting things. So we'll just say course underscore list or apple. And course list dot append. All right, so index category name URL सबका सब हम IDs में append करने वाले हैं. So whatever we wrote down in here we are going to append that in IDs. IDs में बेसिकली होने वाला IDs में सिर्फ ID होनी चाहिए राइट. मेरे को भी ये लगता है. So IDs तो इसके अंदर okay. So let's just take the price endpoints. Right now we want prices over here. So we'll just gather the prices. So in the first place we gathered all the like courses. Now we are gathering the prices of each courses. So let's just say data.json loads. You can use these kind of programs for multiple purposes. For example यार ले लो कि you are doing data analysis and you want to know what is the average price of a simple data analysis course, or what is the average price of an time management course, or what is the duration of an average time management course. So how do you know that what is the highest price of of any time management course on Udemy ever? So you can know that what is the least price of that least price of the course, what is the duration of that course, and things like that. So you can do web scraping and get a lot of data out. Which author has the most time management things and things like that.
सो वेब स्क्रैपिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है डेटा एनालिसिस के साथ यूज़ करने के लिए. सो here we are done with doing all these things, but there is one interesting thing that I am not going to run this program over here, right?